इंटेंसिटी बोले स्पीड टा केते स्पीड रे पिला को स्टिमुलेट कले से शीघ्र कैच करिवो पाठ को पढ़िबा को आग्रह प्रकाश करिवो हेले से इंटेंसिटी टा स्पीड टा तयारी करिवा अछि पिला भीतर दैट द लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेट थॉर्नडाइक कहितला Our recency बोले recent occurrence are the most vivid in our mind. The process of forgetfulness set in as more and more times passes. We forget the things. How to recall them? Revision. Recency बोले revision. तेणु law of revision ताको recall method भी कोई एजुकेशन रे बोले पढ़िथिबा जिंस आउ केते बेले हेले आमे recall करिवा छी मोटा पढ़थिली जे आज कोन कोन क्वेश्चन आंसर्स पढ़िछि कोन कोन मत टाइम भीतर बुझुछि बुझुनी बोलिवा जिंस को सेल्फ असेसमेंट बोले नी दैट मिलला कि नहीं एक प्रस्तुत नियम दुई कोन लेखो प्रस्तुत नियम अभ्यास नियम फलपद नियम लॉ ऑफ इफेक्ट कौन कहूँ इफेक्ट बोले फलाफल बोलची when a modified connection between a situation and a response is made and is accompanied or followed by the satisfying state of affair that connections strength is increased and when made accompanied by annoying states annoying बोले unpleasant thing states affairs the strength decreases केतबेले तुम स्ट्रेंथ बढ़ुची केतबेले तुम स्ट्रेंथ कमुची रीडिंग रे ताई ऊपर से कुछ लॉ ऑफ इफेक्ट तुम किंतु पढ़िबो देखो बोलची दिस लॉ implies that if our efforts are accompanied by the feeling no learning without feeling बोली कहबे तेणु learning must go side by side with feeling learning without feeling is no learning बोली से कहूची ये थॉर्नडाइक so this says that inspiration to learn comes from the feelings whatever lessons you feel if I say rasgulla it tastes very sweet if you don't feel until that you cannot realize it so education must be realizable just reading is not enough law of effect first कौन कहूँ law of readiness बोले प्रस्तुति नियम रे कौन कहूँ से we must learn we must ready to learn शिक्षा को हासिल करिया पाई शिक्षण प्रक्रिया रे प्रथम जिनस होची तमर रेडीनेस थिबा छी मो ए केते तो तुमको पढ़ो रे परीक्षा पाख हे गेला रे बोली कहले मध्ये तमर रेडीनेस नाही बोले तमे कोन करि पारियो शिक्षण प्रक्रिया रे आगो जाई पारियो नाही तेनु रेडीनेस इज वेरी इंपोर्टेंट थिंग तेनु कर ही emphasizes on readiness to learn according to this law when a certain conduction unit is ready to conduct for it to do so will result in a satisfying state and the failure to do so will result in annoying state the success failure in reading depends upon the way how you deal with your readiness प्रस्तुति नियम रे सब बेले तुमको प्रस्तुत करके रखिबा अछि अनुकूल परिस्थिति हेले तमे प्रस्तुत हबो पढ़िबा पाए तमे बा शिशु तेणु स्टेट ऑफ अफेयर तुम चारिपट थी घटना को धरिकी तुम प्रस्तुत नियम निर्भर होता है तुम फैमिली रे टेंशन थी बोले मुझे तुमको बही काढ़ी पढ़े बोले पढ़ी पार कि ना तुम स्टेट ऑफ अफेयर ऊपर डिपेंड कर प्रस्तुत नियम तुम पाखे बहीपत्र न टेस्ट पेपर न पढ़े बोले तुम पढ़ी पार कि नो दैट्स द थिंग सो द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर एंड द इक्विपमेंट नेसेसरी विथ यू जोटा सब दरकार मटेरियल्स मस्ट बी विथ यू एंड थर्ड होची मोटिवेशन you need little motivation readiness कोठु आसीबो मोटिवेशन रो आसीबो कोठु आसीबो मटेरियल रो आसीबो कोठु आसीबो स्टेट ऑफ अफेयर्स अनुकूल थिबा छी पॉजिटिव थिबा छी with you then the law of readiness is the first step of studies बोली से कहल ओके मोटिवेशन मटेरियल आ गोटे स्टेट ऑफ अफेयर तीन टा अनुकूल बात लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोले कौन व्हाट एवर थिंग्स यू कलेक्ट नॉलेज यू गेट
must be implemented. Exercise means what? Implemented. जहाँ भी तुम एवं महात्मा गांधी विषय तो समस्त पढ़ुंट महात्मा गांधी के जन है कौर इंडिया रे केते कोटि कोटि लोक महात्मा गांधी लाइफस्टाइल विषय बही पढ़ुवे महात्मा गांधी हो पारे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज ना इम्प्लीमेंटेशन ना जस्ट रीडिंग एंड एंजॉयिंग पाठ सेमती हम ना जो पाठ भी तुम पढ़ुच थॉर्न डाइक एमती कहूँ व्हाट एवर यू रीड शुड बी एक्सरसाइज बोले एक्सरसाइज कले शरीर जमी दृढ़ हम मसल्स जमी बाहर सेमती स्टडीज रे तुम एक्सरसाइज अच्छी पाठ लास्ट सब एक्सरसाइज एक्टिविटी बोल दौर ना ना सीटा अभ्यास परिणत हवा এটা अभ्यास आईन जस्ट तुम नॉलेज को रेडीनेस आइला पर संग्रह करदेल तापर कौन हो तुम सहित भूली जाऊँ whatever knowledge you are accumulating is not staying with you. That's the major problem today with all brains of the world रे के पढ़ुचे सब ब्रेन्स जाक पढ़ुंट ना जाक से नाम दे अनिता सुनीता रमेश गोपाल सूरज जोसेफ एक्सेट्रा but actually who is reading? Brain is reading, collecting knowledge, storing fails. Storing को importance दियो परीक्षा जाए तुम पढ़ा क्वेश्चन आंसर गुड़ी को तुम ब्रेन रे स्टोर करके रख पारिबा छी हाउ इज दिस पॉसिबल आ विषय थॉर्न डाइक कौन कहूँ रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन अभ्यास कर तेणुक सब पाठर लास्ट तुमको क्वेश्चन आंसर्स दौथा एमसीक्यू दौथा क्लास को पठाऊँ स्कूल रे बसुच ट्यूशन रे डिस्कशन कर व्हाट आर दिस लॉ ऑफ एक्सरसाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट स्टडीज यू हैव मेड ताको रिकॉल मेथड भी बोले कहबे रिकॉल मेथड तो गोटे अलग जिन तुम एकुटिया थिला बेले रिकॉल मेथड अप्लाई कर पारिबो accumulating knowledge is not a very important thing storing knowledge and implementation of knowledge is very powerful तेणुक knowledge is power बोली कहबे सतरे का नॉलेज जदि तुम एक्वायर कर सी तुमको बाध्यतार इम्प्लीमेंट करने को बाध्य कर गोटे ना गोटे दिन एवं तो सुभाष चंद्र बोस गोटे कथा मन पड़ ना महात्मा गांधी गोटे कथा मन पड़ जीवन के गोटे स्थित गोटे अवस्था तो इम्प्लीमेंट करने ट्राए कर हाँ कि नहीं हेले अभ्यास परिणत कर बोले ये पाठरे अभ्यास बोले कौन क्वेश्चन आंसर जोटा तुम प्रैक्टिस कर मोर प्रैक्टिस करवा दरकार बोलছি दैट्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ एक्सरसाइज भल हेले लॉ ऑफ इफेक्ट कंजिनियल हम कंजिनियल फेवरेबल ओके जदि लॉ ऑफ एक्सरसाइज वीक हो गला तो लॉ ऑफ इफेक्ट वीक हो एनोइंग रिजल्ट दब एनोइंग बोले बुझ पार रिवर्स रिजल्ट नेगेटिव रिजल्ट और लॉ ऑफ रिसाइंस मीन्स रिकॉल रिविजन ये रिविजन गोटे प्रकार अभ्यास भाया का इंग्लिश बोर्ड चार्टा देती और लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बोले कौन देखी स्ट्रॉन्गर द स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन तुम कौट रहा पढ़ाई उत्साह पढ़ाई उत्साह कौट आए मोटिवेशन मोटिवेशन तुम किए कर 24 घंटा कौन तुम पचर किए बुलूब कि तथापि तुमको स्कूल रे मोटिवेशन कॉलेज रे मोटिवेशन ट्यूशन रे मोटिवेशन सोसाइटी रो मोटिवेशन पेरेंट्स टू मोटिवेशन सोसाइटी टू मोटिवेशन मिलची सो से मोटिवेशन रे तुम स्टिमुलेट हम पढ़ाई उत्साहित हम आग्रह प्रकाश कर दैट विल बी द बिगिनिंग हाँ तो से तुम रेडीनेस थी प्रैक्टिस बा एक्सरसाइज होबार इम्प्लीमेंटेशन तापर ताको रिविजन करके मन रखा ये कहला लॉस ऑफ लर्निंग लॉस ऑफ के थॉर्न डाइक ओके आम मोटिवेशन तो पढ़ते मोटिवेशन के प्रकार हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यस व्हाट आर दे ओके वन इज बोले अंत आभ्य प्रेरणा बाह्य आभ्य प्रेरणा इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट लेसन कौन अच्छे देख सिलेबस रे इटा को यूनिट रे आम डिस्कशन करते यूनिट 2 हाँ कह
କୋଉଠି ଅଛି? କାର ମୋର କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଥିଲେ ତ ହବ ନଥିଲେ କୁଆଡେ ହବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ୟା ସେଟା କୋଉ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଆଉଛି କହ? यूनिट 3 यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आइरे आसतो पुरा सार्वजनीन शिक्षा हाँ तारे का आसो 11 पॉइंट हेडिंग लेखो रे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी बा एलिमेंटरी एजुकेशन आइरे गुटे राइट टू एजुकेशन भी अछि रे एटा बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंटरी एजुकेशन फर्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक शिक्षा ना प्राथमिक शिक्षा कहले कौन बुझ तार सार्वजनीन बोले कौन बुझ ए दुईटा जिन दुईटा पद को धर गोटे सार्वजनीन आउटे कहले कौन बुझ एलिमेंटरी एजुकेशन इम्प्लाइज प्री प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी भिन्न भिन्न स्टेज अच्छी ना नाई एलिमेंटरीटा हूँ प्री प्राइमरी आ प्राइमरी रे जीव 1 रु 5 क्लास नर्सरी प्लस 1 रु 5 क्लास एलिमेंटरी बोले जोटा प्राइमरी एजुकेशन बोले सीटा का आउ आम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे ये प्राइमरी एजुकेशन उपरे ही प्राथमिक शिक्षा बोले नर्सरी 1 रु 5 श्रेणी पर्यंत आई ऊपर विशेष विशेष गुरुत्व दिया जाए प्राइमरी एजुकेशन कहीं ये हूँ फाउंडेशन आ ऊपर छिड़ा होइतिबो कॉलेज यूनिवर्सिटी से अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये जब भुसुड़ी पड़ला ये सब जाक भुसुड़ी पड़ी तेणु प्राइमरी एजुकेशन is very important. Article 45 of Indian Constitution DPSP रे लिखा अछि all children below 6 to 14 years should be granted education 6 रु 14 वर्षर पिला माननकु मुक्त शिक्षा प्रदान करबा उचित धारा 45 आम संविधान रे राइट टू एजुकेशन बोलबे ताको एटा बेसी थर परीक्षा आसे धारा केते बोलकी एजुकेशन टू 6 to 14 years child below Article 45 right to education हाँ हाँ Article 45 बोल रहे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 रु 10 वर्ष पर्यंत होची लोअर प्राइमरी स्टेज 10 रु 14 वर्ष होची हायर प्राइमरी स्टेज एमती प्राथमिक स्टेज को दुई भाग कराई 6 रु 10 वर्ष तापरे 10 रु 14 वर्ष गोटे प्राथमिक न्यूनतम प्राथमिक स्टेज ऊर्ध्व प्राथमिक स्टेज स्टेज बोले स्तर प्राइमरी का दो प्रकार लोअर प्राइमरी आ गोटे हूँ अपर प्राइमरी हाँ लोअर प्राइमरी हूँ 6 to 10 years अपर प्राइमरी हूँ 10 to 14 years हेले टोटल एलिमेंटरी एजुकेशन आमर केते वर्ष प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष बोली लिखछि अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन काउंसिल कमिशन इंडियन एजुकेशन कमिशन गोटे संस्था अच्छी से एमती सेट करछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन नेक्स्ट लिखो प्राथमिक शिक्षार उद्देश्य गुड़ी को कौन कौन टिके मन रख आई भितर आ गोटे जिनस आसछि जे यूनिवर्सलाइजेशन शब्दर अर्थ कौन प्राथमिक शिक्षा तो जान लो तार सार्वजनीनकरण शब्दटा अच्छी से कौन दर्शाए इट शुड रीच टू ऑल यूनिवर्सल बोले ऑल रीच टू ऑल सबुठी समान हवा कथा समस्त पाखे पहुँचवा उचित सर्वजनीन बोले जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एजुकेशन शुड रीच टू ऑल दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्वजनीन और यूनिवर्सल is that clear उद्देश्य एक
डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी शिशुर व्यक्तित्व विकास करवा सुनागरिक सृष्टि करवा चाइल्ड पर्सनालिटी तो टू प्रिपेयर चिल्ड्रेन फॉर गुड सिटीजनशिप सुनागरिक गठन करवा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन चाइल्ड शिशुर बौद्धिक विकास करवा तीनटा है ना शिशुर दक्षता वृद्धि करवा टू अपग्रेड द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्राथमिक शिक्षार सर्वजनीनकरण निया जाइथिबा पदक्षेप स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षार सर्वजनीनकरण भारत सरकार नहीं पदक्षेप भारत सरकार पदक्षेप सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा एक ब्लैक बोर्ड अभियान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन स्कीम एटा केबे हला 1986 रे हला 1986 87 रे द टास्क वाज बिगन टास्क फोर्स काम आरंभ कला कार्यक्रम केबे आरंभ हला 86 रे हला स्कीम 87 रे कार्यकारी हला डाटा इन शॉर्ट मन रख ए कौन दर्शाऊँ बोले प्रत्येक शिशु घर ठारू 1 किलोमीटर दूरतार स्कूल पाइबा द डिस्टेंस ऑफ स्कूल मस्ट बी 1 किलोमीटर टू द हाउस ऑफ द चाइल्ड प्रत्येक स्कूल रे 2टी श्रेणी गृह मिनिमम रहिबा 2 क्लासरूम्स 1 ब्लैक बोर्ड पायखाना टॉयलेट रूम फील्ड टू प्ले एंड लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स विज्ञान उपकरण तापर शैक्षिक उपकरण एजुकेशन टूल्स मस्ट बी अवेलेबल अकॉर्डिंग टू दिस योजना कलापटा अभियान योजना रे कहछि प्रत्येक स्कूल रे अति कम रे 2टा श्रेणी गृह थिबाछि ओके ता छड़ा कलापटा थिबाछि शैक्षिक उपकरण विज्ञान उपकरण थिबाछि खेल सरंजाम थिबाछि पायखाना थिबाछि आ टॉयलेट हला इटा ए कलापटा अभियान ता इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्कीम आइला मिड डे मील प्रोग्राम मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील प्रोग्राम इटी पिला मानकु खाद्य अत्यावश्यक द्रव्य शुण खाद्य नथिले पिला मानकर मुंड काम करबनी तेणु आम गोटे पढ़ेले तांके आ गोटे शुणुवे न शुभिबनी तांको पेट खाली थी बोले मुंड कांदिब बुझिपारछ ना नहीं से कालिदास गोटे महापंडित थिला ना सी जेबे भी राजसभा रे गले से ग्यारंटी जितब कालिदास महाज्ञानी थिला से ताकू हरेबा पई षडयंत्र कले से सभावासी माने किए जन जाई सुनदेला तार माँ ताकू कहबाटा कालिदास को जे आज चाउल नाही बोली कहीदेवा माने रांधिबा पई तांकर असुविधा अछि बोला भलिया सेट कर देले से दिन इम्पोर्टेंट सभा बसी कालिदास को हरेबाटा होती टार्गेट तो ये गोष्ठी भितर जने जाई ता माँ को एमती शिखेला जे तू कालिदास बाहरला बेलू सभा को
खाली एतिक तुम कहीदिव माँ आज रोषे करने को चाउल नाई रे बापा बोलिकी तापर किस होचे हम देखो एक्सपेरिमेंट एटा गोटे तो सतुक सत से टिपटाप होकर आज सभारे मुझे जितवा राज्यसभा बोलिकी he was preparing and coming out. Mother was standing and outside and said, "Dear son, today we have no rice to cook." बोली कहीदेला ये भरेला सभा को सब बेले पास का ये एबे फेल किन देगला देखो हेले से क्वेश्चन पचारथिले से अन्य लोक माने से क्वेश्चन तार ब्रेन भीतर को एंट्री होनी एंट्री हला से टिके तार आंसर थिंक करबी बोला को मदर टोल्ड नो राइस हाउ शी विल कुक शेड तार ध्यान भटे गला से दिन से फेल देला बोले खाद्य हम पाई बहुत इंपोर्टेंट से गोटे मोटू पतलू नाई कि न खाइले दिमाग नहीं चलता है बोलियो कोनटा सेटा तो से डायलॉग और समोसा खाओ तो से कोनटा से डायलॉग मार दो खाली पेट दिमाग नहीं चलता हाँ तेणु करी सीटा को देखिए आमर मिड डे मिल है बोल कि मध्याह्न भोजन स्कूल पिला खावा को दे नहले आमर पिला मन आइबेन रे तुम कहती परा आमर गोटे सांग से हेडमास्टर अच्छी 11टा बेलू मो स्कूल गला बेलू गोटे पिला ना ये खट पकई आराम से स्विच भी लगे तू हेडमास्टर किस तू खट पकई स्विच किस बोली स्कूल किस पिला मन कहती तुई खट पकई शुई पड़े किस पाठ के पढ़े पिला आइला तो मुझे पढ़े कौन कांथ बाड़ को पढ़े कि बोलती चल डाकी जा बोले गलु कहीं आए कौ पिला आना सब पिला अच्छा गाँव में टिके डंगर पहाड़ ऊपर को चढ़ले 2-3टा गाँव अच्छे गोटे गाँव को आम टाइल को गलु चल जा बोले गोटे पिला गोटा आसे बोली कहले ना आज्ञा मो गाई चरे जावार मो बापा गाल कर मार मत बोलती पड़े जाऊँ बोलते सी आज बोलते मुझे घास आने अच्छा आम गाई किस खाइब किस कह तुम आना समान 12टा है मत से रजा बोला रजा खाई जीवु बोला मिड डे मिल हम तो सरकार खाद्य टी खाई जा बोला हो ठीक अच्छे बोली मुझे रहीगली 12टा जाए 12टा बेलू से पिला माने पिंपुड़ी भाया लाइन रे माड़ बांधिक बाहर किना गोटे दाबला गोटे धरिकी से घास काटा कौन तार बापा कि काठ आने कौन जंगल जावा प्लेट गोटे धरिक धीरे बाहर हाँ से टाइम पाठ पढ़ा बोली आ कौन कह खावाटा टे लेट करदे तो घंटा ABCD ओ आई कौन टिके शिखेक लिखिक खावा देविन रे बोली कंडीशन रखे बोली से दिन टी से पढ़ेला पिला जन गोटे के 20टा पिला ना 25टा पिला का अच्छा बड़ स्कूल बेसी ना यू 12 किलोमीटर भितर अच्छे स्कूल है प्राइमरी स्कूल एवं से हेडमास्टर होगा हाई स्कूल ना तो ME स्कूल प्रमोशन पाई ये आमर अवस्था केवल मिड डे मिल आशारे से अधिकांश गाँ गहल कथा टाउन सिटी तो आम कंपिटिशन चलते चलो आज स्कूल जावार कॉलेज जावार वी हैव द कंपिटिशन माइंड ना पिला मन से माइंड थी कि पेरेंट्स मन से माइंड ये कर पेरेंट्स मन प्राइमेरी एजुकेशन उपर दौना इयरनिंग उपर दौरान कि घर मेंटेनेंस केमती हम प्राधान्य दौरान एजुकेशन सीना प्राइमरी बोलिक ये कहुच्छी कि प्रायोरीटी क्या दौरान मेंटेनेंस ऑफ फैमिली केमती हम जब कि चाकरी मिल बोलिकी तपस्या कला भाया 21 वर्ष पिला माने कठिन परिश्रम कलापर चाकरी मिलनी देखुना कि तेणुक से इंटरेस्टा स्टिमुलेशन मिलूनी स्टिमुलेशन केमती मनकर ओडिशा गवर्नमेंट इमती करदे प्रत्येक ग्राजुएट को गोटे चाकरी थवा आम भी आखपाखे देखा जे भी ग्राजुएशन कर पिला 100% ग्यारंटी गोटे चाकरी पाई जाऊँगी तार लाइफ सेटल हो जाऊँगी किए पढ़न रे समस्ते लगी पढ़िक पढ़े आमर एजुकेशन फेल्यूर कारण हूँ जो टार्गेट ऑब्जेक्टिव आमको मिलूनी से निराश कर दे पिला फर्स्ट क्लास पिला माने जॉब लेस बस माइंड कौन हम 22% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर मेंटल हॉस्पिटल रे पढ़ते तुम कहले विश्वास कर कि नहीं कि तुम जाकि गूगल डाटा स्टाटिस्टिक्स काढ़ देख OAS IPS OPS जो मैंने प्रिपेयर होती ये मेंटल टर्चर से तुम कहले विश्वास कर फैमिली प्रॉब्लम पैसा पत्र असुविधा अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज नहीं सरकार तरफ सहयोग नहीं केते घाटी पढ़े 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 बोर पोक हो जाती लास्ट को मलु भाया हताश होकर डिप्रेशन को जाऊँगी डिप्रेशन जीवा रेट मैं तुमको कहली 22% स्टूडेंट मास भर हाईली एजुकेटेड फर्स्ट क्लास स्टूडेंट जाक
से फर्स्ट क्लास स्टूडेंट जाक होचंते हमर मेन प्रोडक्ट जाक जे माने हम भविष्य देशर भविष्य गढ़िबे से माने मेंटल हॉस्पिटल रे पढ़थिले आ के देश गढ़िबे 100 को 22 बेले पाखर पड़छि कि हो 22 न हो 12 भी हेले हमर केड बड़ लॉस तुम चिंता कर आम समाजर लॉस आम देशर लॉस आमर लॉस हु केयर्स दिस एमती सब असुविधा हो को विषय आम मेन मुद्दा कौन थिला मिड डे मील प्रोग्राम तो ए हिसाब रे गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोग्राम केबे लॉन्च कला देखो डेट लिख हाँ जगन्नाथ सब स्कैम फैम सब हम रे भाग्य विधाता मान चेयर बस आम आ कौन कर कह 1995 रु ए योजना ओडिशा रे लागू है 1995 नेक्स्ट प्रोग्राम ये सब की प्रोग्राम तुम पढ़ुछ रे हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ प्राथमिक शिक्षा प्रोत्साहन देवाई कौन कौन पदक्षेप नहीं नेक्स्ट लेख डीपीईपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डेट लिख दियो 96 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम नेक्स्ट हूँ जनशाला कार्यक्रम जनशाला प्रोग्राम तल तल लेख देख लो नेक्स्ट हूँ सर्वशिक्षा अभियान इंग्लिश रे भी सर्वशिक्षा अभियान का इंपोर्टेंट जाक मुझे देखुची अलग जाक अच्छी नेक्स्ट हूँ अपग्रेडेशन ऑफ ईजीएस सेंटर्स पीजीएस सेंटर्स बोले ओडिया रे कौन निश्चित शिक्षा केन्द्र गुड़िकर नियमित प्राथमिक विद्यालय को उन्नतीकरण हो दे परा एसएम बही की पेज देखे 116 तुम लिख लो अपग्रेडेशन ऑफ ईजीएस सेंटर्स स्पेशल प्रोविजन फॉर एसटी/एससी चिल्ड्रन नहीं फोन नंबर स्पेशल प्रोविजन फॉर एसटी/एससी चिल्ड्रन अनुसूचित जाति जनजाति मानक पई स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था एमती सब विभिन्न स्कीम करके सरकार चलई सरकार को सफलता मिलनी एजुकेशन रे एबे नहीं केबे भी मिलबनी जिते पर्यंत सचेतनता आसबनी पिला मन भितर एनकरेजमेंट मिलबनी ये सब राइट टू एजुकेशन रे इटा आसला पूरा 14 आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 45 Article 45 says that all children from the age group 6 to 14 years must have free and compulsory education in India. এটা হচ্ছে amendment act কেতে 86 amendment act সাইড রে লিখো Article 45 is equal to 86th amendment act 86তম সংশোধন আইন হলা राइट टू एजुकेशन रे 21 को बोल के लिखा वाला आर्टिकल 21 ब्रैकेट ए मतलब आश्रित का लिंक कौन लिख दो तुम मैंने गुड लाइन लिखियो के समय करछ और लिख कौन हला हां सीधा लिख राइट से जो धारा 45 जोटा सेटा 86तम संशोधन आईन 21 को ब्रैकेट को कौन शिक्षागत अधिकार जे शिक्षा ये बाध्यतामूलक मुक्त और बाध्यतामूलक दुईटा पद ओके थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास